Hello. तो स्टार्ट कर सकते हैं हम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज Good का morning. अपना लेक्चर है सेमी ऑटोमेटिक कपलर का। तो फैमिली वेबटेक से मिस्टर विजय कुमार जी आए हैं हमें लेक्चर देने के लिए। तो सबसे पहले उनको वेलकम करता हूँ मैं। और आगे का लेक्चर लेंगे श्री विजय कुमार ठंगवेल जी। सर प्लीज। Good morning, everyone. So myself, Vijay Kumar. Right. So today I'll be walk through the presentation on the crash with the coupler for Amrit Bharat. It's a semi-automatic couplers. Okay. So today we are going to talk about. Okay. So sorry. I will read. Oh. Okay, so sorry for that. I'm not familiar. I mean, I speak very little Hindi, so which is not suitable for training. So our colleague will support under Hindi, but I speak in English. So today we'll be walk through the general information, component description, installation, coupling and uncoupling procedure, adapter, and daily checks and maintenance. This is the overall overview of today's training. And yeah. So this overall information that we will be discussing in the upcoming hours, and also meanwhile, when you have some questions, we can also talk about that. Okay. So first thing, I would like to start with the general information. So here, Amrit Bharat trains, when we discussed, it's like one of the beautiful innovation that's we come out for the future, generation to give the safety to the passenger as well as the comfort of the passenger. So this is a semi-automatic couplers where we have, where we have the safety features as well as to avoid the jerk free to the passenger. So this innovation is comes along with this. So we closely work with team in RDSO. So then it's a keep on we had in the past we have keep on questions that there is a the safety features are not in answer to the couplers. So that's where we are started discussion and we come out with these requirements and we are closely work and now we have our product in our hand. So this semi automatic couplers, I would say this is a semi automatic couplers, not complete automatic couplers, which means so semi automatic couplers where we coupling will have automatic and uncoupling we have a manual uncoupling. Okay, so that's why we call it as a semi automatic coupler. And here if you see this general information, so this is a technical information of this coupler where it can withstand loads up to 1800 kilonewton. 1800 kilonewton in compressive condition, and tension it's 1500 kilonewton. Okay, you see the difference. So it's almost similar to the compressor and tension load. And we have a share of load which is 1800 between 1800 to 2000 kilonewton. हेलो। इसमें जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो हमारा सेमी कपलर है इसमें जैसे कंप्रेसर लोड कितना है 1800, मतलब कितने कंप्रेसर से चलेगा, और टेंशन लोड है, शेयर लोड है, रिवर्सिबल स्ट्रोक कंप्रेसर लोड है, ये सब सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके।
Yeah. So if you see this reversible stroke in compression load, you see 1800 kilonewton will have a 50 mm. You see this graph. So this is the you see this is a reversible energy. So during a compression. So this is 50 mm during the compressive loads, coupling and service condition. And reversible energy absorption is during this load 20 to 35 kilojoules. 20 to 35 kilojoules within this coupler. And reversible stroke in tension. Stroke is a distance. It's a distance. How much distance it will travel when applying that much load. Okay. So for the reversible stroke in tension, it's a 24 mm. It's a 24 mm where we can see maybe the picture is in quality, but here we have a 24 mm. This is in the reversible. Sorry, tension. Yeah, tension. And this is energy absorption during the tension is 8 kilojoules. And we have a irreversible stroke, which is during a crash condition. So when we have 46 kilojoules, so this is tested and verified in our facilities. Dynamic test has been completed, and which is verified 46 kilojoules that we are meeting. So up to 188 mm. Okay, and we have articulation angles about 12 degree in horizontal and 6 degrees in vertical. So this is about the technical information of this product of our casualty Amrit. So articulation is the movement of this pivot. So it's like a horizontal angle and vertical. Okay, so horizontal is plus or minus 12 degree. Okay, so both directions, and also vertical. So vertical articulation is 6 degree plus or minus. So this is how the articulation feature of this coupler. Okay, so and one more thing when we talk about the general information, so whenever you see the couplers or products in our shop floor or in our product line, commissioning line, so always we would like to follow the the traceability card that we have, I mean the nameplate. So where we have the product and revision, and when it is manufactured, all the informations are available in this traceability, I mean the nameplate. So that's one major thing that you have to notify when you see the product. सेमी कपलर में एक नेम प्लेट होती है जिसमें रिवीजन लिखा होगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और पार्ट नंबर, ये सब मेंशन किया रहेगा उसमें, एक प्लेट नेम प्लेट लगी होगी. Yeah. So this, as I mentioned earlier, the technical requirements as per the RDSO number you see 2017 CG07, and all these informations are mandatory, and we have all the products has this information. And also there are the some important things that we should follow. One is the safety aspect. So when we talk about the safety, that's comes our first priority. As we all are serving to the people, so safety is our first priority, and before that, safety to us who are working on this. So we have a safety notes in our manual and all the instructions. So you should be aware and what's the main danger and warning and caution and notice. So these are the symbols in our manual. When you see our manuals, then please take care of this information, because these are the very important things that we should follow and take care of. So not only for us and the persons who are working in the field and the persons who are doing the job, the information is available, whether what should they take care of, what should they identify, all these informations are mandatory. So you should be cautious to this information. सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और सेफ्टी के रिलेटेड कैसे सोशल नेटवर्क से सेफ्टी गाइड यूज करना है, तो सब हमारा मैनुअल में लिखा हुआ है. Okay, so component description. So component description now, this innovation fuel coupler we have in our our racks. So I will now go through the components of this coupler, what they are and how they functioning. So just give a short description of each components that we have in our Crashpati coupler. अब हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्रैशवर्दी कपड़े में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं.
Okay, so here we have components of this our product. So this Amrit Bharat couplers, as I mentioned earlier, so we have new type 10 coupler head, and we have a muff coupling, drawbar, housing, and deformation tube. So we will go through individual components. Okay, this is a overall picture, but इंडिविजुअल आएंगे उसमें देख लेना इसको. Okay. so this is a you see that this is a general assembly. So this is coupler without our underframe. So this is how the coupler will be there in our product. Okay. So here we have the type 10 head at front, which is the for mechanical coupling, and we have a muff coupler which connects coupler head and the drawbar connections. Okay, and we have a drawbar unit which is connected to this housing unit, and we have elastomer pads in it. So here these elastomer pads are acting during the compression and tension loads, as I mentioned earlier. So these will have the energy absorption feature, reversible and irreversible. ये टाइप 10 कपलर है. इसमें जो सबसे आगे लगा कपलर हेड है जो मैकेनिकली लॉक करता है लॉकिंग के लिए. सेकंड है इसके मफ कपलिंग है. फिर इसका ड्रॉ बार है. देन हाउसिंग है. इसमें शॉक एब्जॉर्ब ये अच्छे से करता है. कितने न्यूटन शॉक एब्जॉर्बर? No, yeah, energy absorption. एनर्जी ऑब्जॉर्ब. Energy absorption. ये That's elastomer pads. एलास्टोमर पैड. And we have these mountings. So these are the car body mountings under pocket, and we have this vertical support spring. This is also mounted to the car body. So if you see this coupler is sliding on this support during the service. Okay, so this is how this is without underframe, but anyhow we will see in the later slides then how they are mounted to the car body. Okay, so here the main function, this coupler head, this is connecting mechanically between two cars, and this muff coupler connects coupler head and the drawbar, and this drawbar is connected to this internal housing, and which are connected to the car body. So this complete arrangement has the they have moved and they absorb the energy during the tension and compression, and also during the crash condition we have some share of pins where I mentioned earlier the share of load. So 1800 between 1800 to 2000 kilonewton. So these are the share of pins. If you see this, then these share of pins will have during the crash scenario they will share up and absorb the energy by the deformation tube. Okay, so far okay, or any questions or any clarification made? So please stop me if you need any clarification. अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछिए. जो क्रैश वर्क भी इन्होंने बताया, जैसे वो पिन बाहर आ जाएगी इन केस ऑफ जब 1000 न्यूटन से ऊपर हो जाएगा है ना, तो उसके बाद जब वो पिन सब आउट हो जाएंगी या कपलर अपना बाहर आ जाएगा. Yeah, so these pins, when the load is extend more than 1800 kilonewtons, so this pin will shear off. Then this deformation tube will expand. This goes inside. Then this deformation will expand and absorb the energy. एक्स्ट्रा सेफ्टी है. अगर कुछ मतलब होगा तो ये जो डिफॉर्मेट ट्यूब है ये एक्सपेंड कर जाएगा ना. एक्स्ट्रा सेफ्टी है. वो बाहर से देखने से पता चल जाएगा नीचे से अंडरफ्रेम. हाँ, अंडरफ्रेम उसके वीडियो शो दिखाएंगे आपको. What was the question? Actually उन्होंने क्या है कि they were asking that we can see the deformation tube. Deformation tube. Yeah. After accident or something like that. Yeah, I will show. We see. Yeah. That's it. वीडियो में से. कोई वीडियो में दिखाएं. Okay, so we will go through one by one components. Okay, so this is a type 10 coupler head. Actually, this is as per the standard, we can call it as a Schaffenberg type 10 coupler, or our TSI coupler head that we call it. And here, this is the international standard one. So it's a EN 16019. As per EN 16019, the standard is been followed for this coupler, which has
high compressive load capacity and tensile load. This is mainly used for all the main lines across the wall. I would say this is this coupler head having the high energy absorption and tension load component. So here you see I will show you the next picture how this is functioning. So this coupler heads are standard horizontally guide gun. So here we have this guide gun, right? So this guide gun helps during the during the coupling at not in straight condition but in a different misalignments. So during the curve or during the at a vertical misalignment or horizontal misalignment, so this guide on we have the to support for the coupling. And we have this cone, female and male. So there are two halves in the same head, so male cone and female cone. Okay, and we have an internal mechanism that I will show you. ये टाइप 10 कपलर में आप हेड है, हेड में आपका ये जो आर्म दिया है वो होल्डिंग के लिए, और सेकंड जो हमारा ये फीमेल है, एक साइड फीमेल है एक साइड मेल है। जो फीमेल वाला है जो कपलिंग के टाइम पे उसका मेल पोर्शन इसमें आएगा अंदर, और उसका फीमेल पोर्शन दूसरे कपड़े का कनेक्ट होगा, और नीचे है रिलीजिंग बार, रिलीजिंग लीवर है नीचे। Yeah, so that I will do. Yeah, right, Yeah, right. I will show you. So इसका फंक्शन क्या है, ये जो रॉड है sorry, पकड़ने के लिए वो होल्ड के सपोर्ट के लिए है, देन रिलीजिंग लीवर। which one? What was the function of सेंट्रल this? रॉड This one. Support. Yeah, this is what I mentioned. This is during the misalignment. Misalignment, when horizontal misalignment or vertical misalignment. So when both cars are coupling, so this will guide guide the couplers to couple. So here we have this extension. So this extension guide bar. This is a guide cone we have, and this is a guide cone or guide horn we say. Okay, sometimes some manufacturers call as guide horn, or someone is a guide cone. And here this is a guide plate. Guide plate. This is extension you see. So this extension. Okay, for typically there are two types, whether we will have extension without this guide plate and with this guide plate. So our couplers having with guide plate, so to give a more gathering range. Okay, so this head will have the mechanical features that I will explain, and followed by there is a provision for the muff connection as I explained. So this interface connect with the any rest of the area. So this is a common arrangement. So in our product we have a drawbar arrangement, but if you see in metros or in other couplers, they will have the other gas hydraulic or some other energy absorption design based on their requirement. So in our design we have our drawbar mechanism. So this interface will have the drawbar connection to the drawbar mechanism. Is it universal in all trains or metro or only for one Amrit Bharat? No, here we are using this coupler for our Amrit Bharat trains. But if you take in a worldwide as an example, so this coupler mainly used in main lanes. Okay, so main line, this we call it as a main line coupler because of the force requirements that we have. Okay. So this has a unique standard, as I mentioned, EN16019. That is a standard of manufacturing this coupler head. So this is not only Wabtec, whoever manufacturing this coupler head will have the same standard to get meet the following requirement of this coupler head. ये बेसिकली इसका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 16019 EN16019. That is the overall standard requirement by the all over the world to manufacture this coupler head. ये जो स्टैंडर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलता है, तो सेम स्टैंडर्ड प्रोसेस पे यही बना है हमारा। Okay, so then जैसे गाइड पिन का बताया, तो गाइड पिन ऑटोमेटिकली वर्क करेगी ना मैनुअली वर्क? गाइड पिन ऑटोमेटिक वर्क करेगी, उसमें आपको वीडियो में दिखाएंगे पूरा। so this guide horn is permanently fixed to the coupler. Okay, there is no manual.
It's automatically, it's a mandatory requirement to have this gate cone for this coupler kit. बेसिकली ये डायरेक्शन के लिए जब कपलिंग होता है तो डायरेक्शन मेंशन करता है, ये फिक्स रहेगा जब नहीं, ये तो फिक्स रहना है, ये तो हाँ। मतलब मूव नहीं मूवेबल नहीं है। बीच से जब कपलिंग हो रही है हाँ तो ये ऑटोमेटिकली उसको डायरेक्ट करेगा दूसरे कपलर को। हाँ, जब कपलिंग होगा तो जो कपल होगा कपलर, तो ये कपलर तो इसमें डायरेक्शन शो होगा, ये मूव भी का डायरेक्शन पे शो करेगा। अच्छा, डायरेक्शन शो करेगा। Okay, so okay, so this is the mechanism of this coupler. You see, so here we have this plate and we have this link. So this is a coupler link from the male cone, and this is a two couplers are coupled now. Okay, so here we have this center pin and lock pin, and we have a link, and we have a spring, tension spring. Okay, so when we couple, this coupler will automatically connect. So we have a link plate here. So this is a link plate. So you see there is a gap. So it will connect to this spring. So this is what the coupler mechanism will work. So it is like when we push the coupler together. So male pin has a link. So that will couple with this this our link plate. We have a slot. So that is linked to this plate. ये मैकेनिज्म है अपना हेड का, जिसमें नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक पिन है सेंटर में। वेयर इज द पिन? So this is a coupler center pin. ये सेंटर पिन है। So this connects link plate, rotating plate, link, and this releasing bar all together. Okay, so this is the indication of the coupler that I will come later. So this is showing how whether the coupler is coupled or not. So here the coupler is not coupled because it is showing outside. Okay, that's why we are having the gap here. Okay, so I will take it. Okay, so when we connect these two couplers, the force transmission between one car to another car through the phases and to the rest of the parts in the coupler. Okay, so this is how the mechanism is working on the type 10 head coupler. जब ये कपल होगा तो उसमें जो पिन है, पिन अंदर जाएगा, आपको फिर उस टाइम पता चलेगा कि कपल हुआ कि कपल स्टेज में मैकेनिज्म पता चलेगा बाद में। जो ये साइड पे लगी हाँ, साइड में पिन होती है, जब कपल होगा ना तो पिन अंदर की चले जाएगा। हाँ, लॉकिंग का इंडिकेशन। Sorry, yeah, coupler is locked with this link. So here this link and this locking plate. इसमें कोई lubricants की requirement है इसकी मेंटेनेंस? Yeah, so there are grease applications are there that I will show you. So the grease application is there, and also why we have this mechanism is like, okay, so we have the load distribution equal to the two couplers, so that makes a equilibrium, and we have a force prevent inbound unlocking, so there is no voluntary unlocking here because both are interconnected. So unless you manually uncouple, so there won't be any voluntary uncouple. So that's the advantage of this coupler. And we have a compressive loads are transmitted to the flat surface, as I mentioned. So between these flat surface, the compressive loads are transmitted to the each coupler's halves, and they have a loads will take the energy will taken by the elastomeric pad. Can you repeat? So these phases having the force will be transmitted to these four phases, okay, for the compressive loads, and these loads are transmitted to this rest of the area to the elastomeric pad. So as I mentioned, the elastomeric pads have the energy absorption feature, so where the high level of energy being absorbed by the elastomeric pads, so during the compressive condition. जब कपलिंग होगी तो जो फोर्स लगेगा इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, जो ट्रांसमिट यहाँ तक, देन उसके बाद जो फोर्स पीछे ट्रांसफर होगा, इलास्टोमर पैड है उस पे फोर्स ट्रांसफर होगा एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके जो फेस है हाँ, इसके फेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैड, इलास्टोमर पैड,
कितने हैं पैड्स ये हम 4+2. 4+2 सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे Yeah, that I will show you how you can identify whether it's coupled or uncoupled. That I will show you in the upcoming slide. ये आपको वीडियो पे दिखाएंगे पूरी। Yeah, I will show you. So this is just an explanation of the head, but we will show you the uncoupling or coupling. ये सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम शो किया, आपको बताया कि मैकेनिकल कपल कैसे होगा, फंक्शन कैसे करेगा, आपको वीडियो में शो करेंगे सर को। Okay, so the next feature, as we discussed, so this is a muff connection. We call it as a muff coupler. So this muff coupler connects coupler head and the drawbar. So which means two modules, one is coupler head and one is drawbar. So those two modules to connect this interface we have. I mean this component we have called muff coupler. Okay, if you see, so this is a exploded view of this muff coupler. We have two halves. Okay, so top and bottom we have to connect, and we have a just lock plate, and we have a 4 holes. Okay, so 4 holes having M16. So this is what we have, this muff coupler. ये मफ कपलर है, ये काम करता है आपका कपलर हेड को और ड्रॉबैक को दोनों कनेक्ट करने के काम आता है। ये इसमें दो पोर्शन है, जो उसका राउंड सरफेस है, इसमें नट से टाइट करेंगे तो दोनों चीज टाइट हो जाएगी आपका मफ कपलिंग को टाइट करने के लिए, ड्रॉबर और कपलर हेड। Yeah. So this muff coupler is connected to the two models like the coupler head and the drawbar, and this also transfer the loads. I mean carry the loads to the next elements from the arrangement. Okay. So this is what one of the main element that we should take care. That we I will show you the checklist on the maintenance. So this muff coupler has to be maintained, and the torques or fastness has to be monitored. ये मफ कपलर में इसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है और उसमें टॉर्क मेंटेन करना जरूरी है, 180 न्यूटन टू 200 न्यूटन। Yes, the maximum टॉर्क maximum is 200 न्यूटन टॉर्क लगना चाहिए इस पे। और ये बेसिकली जो काम करेगा, जो कपलर हेड में जो जर्क आएगा, फोर्स आएगा, वो ट्रांसमिट करने का काम आता है, और ड्रॉ बार में पीछे से ट्रांसमिट करेगा जो जर्क आएगा। Okay, so when this muff coupler performs, I mean connected to correctly, then the force will be transferred to the other element of the other module of the coupler. So this muff coupler maybe looks like a small, but plays a major role in the coupler. ये दिखने में छोटा लग रहा है, बट इसका मेजर रोल है यहाँ पे। Sir, एक मिनट sir, 1 minute sir. What is that thing that the rod small double type thing inside this one? Yeah, that's one is to lock the coupler. So that I will show you. Okay, so here this is a draft gear assembly with deformation. So we here DT means deformation tube. Okay, so this draft gear device is used for energy absorption, as I mentioned. So here this is the drawbar, and which has the pads here internally, and this is a and we have inside. So this is a internal housing that we have, internal housing, and we have this is an external housing, and we have the support plate that is connected to the car body. So and here this external housing is also connected to the car body, where we have fastness. Just to understanding purpose, we have this external housing connected to the car body. And as I mentioned, we have two load conditions, compression and tension. So we have arrangements and elastomic pads, 4 in compression and 2 in tension. So that's how the loads and the technical specification are met, because the loads more will be there under during the compression, and loads are less in the tension. So that's how the pads arrangements are made inside. So these internal, the front elastomic pads are acting during the compression, and the elastomic pad inside this housing will act during the tension. ये ड्राफ्ट गियर है डीटी का। इसमें क्या है, आगे जो लगा ड्रॉबार लगा है, देन डिफॉर्मेशन ट्यूब है, देन सपोर्टिंग प्लेट। इसके अंदर इलास्टोमर इसके अंदर लगा हुआ है। जब जर्क आता है तो इलास्टोमर प्रेशर एक्सपेंड करते हैं अंदर। Elastomic pads are compressing, not expansion. So
this compression, these elastomic pads have a quasi-static, release. So like when it's you see the rubber band. So when we press, it has some energy. Then when we release, it slowly expands, right? So that's how the elastomic pads are acting. Okay, so when the loads are released, they will come to their original position slowly. So that's a quasi-static, the principle is used in this compressive, elastomic pads. Yeah, tension load. Compression charge. 4 plus 2, the arrangement. Okay, so as we discussed earlier, this deformation tube, right? So this deformation tube is one of the the new technology, as I mentioned. So that we call it as a crash-worthy coupler, which means so during the crash scenario, so this is a sacrificial element that we have in our coupler design. So this deformation tube is a sacrificial element, which means during the crash scenario, this the shear of bolts here will shear off and the deformation tube will enlarge. By this, entire coupler will move inside and this deformation tube will enlarge. Okay, so because of this, we call it as a sacrificial element, which means once the deformation tube is expanded during the crash, then we cannot reuse it and we have to change it, complete this deformation tube arrangement. So this is a sacrificial element, and this deformation tubes absorb the energy. Okay, it's a irreversible. It's a irreversible. जब क्रैश होगा तो ये डिफॉर्मेशन एक्सपेंड करेगा अपना, तो ये बहुत ही Irreversible. इरिवर्सिबल एक्सपेंड करेगा, तो ये एक्सपेंड कर देगा क्रैश करने के टाइम पे, जब पूरा क्रैश होगा एक्सपेंड करेगा। दोबारा नहीं अपनी मतलब कोई ये after the crash it will be come in their position or not? No. It's irreversible. We cannot say. It's a metal one. It is once expanded. That's it. परमानेंट एक्सपेंड होने का चेंज ही करना है। Yeah. Okay. पता चल How much Newton the force will be? Yeah, that's what we said. Na, 1,800 kilonewton to 2,000 kilonewton. जब में 1,800 न्यूटन का फोर्स लगेगा तब एक्सपेंड कर जाएगा, तब उसके बाद ये बदल से यूजन को चेंज ही करना है। से देखने से पता चल जाएगा कि जैसे एक्सपेंड कर जाएगा, ये जो इलास्टोमर है मेंटेनेंस में हमको पता चल जाएगा कि दिख जाएगा कि ये फेल चुका है। हाँ, ये फेल हो चुका है, इसका इलास्टोमर है, एक्सपेंड कर जाएगा पूरा ये। बाहर से दिख जाएगा। बॉडी के अंदर होगा ना, बॉडी को वो दिखाएंगे आपको, बॉडी के अंदर है। And we have some share of pins. I mean, how to say? So share of indicator, which means sometimes what we say unintentionally the crashes. Then we don't aware. So sometimes some unintentional, not a major crash, but some smaller crash. So the forces might be more because of the high speed of the train. Okay, during that condition, the shear will happen. So to identify that, so we need to have a shear of indicator. So that I will see shear of pin we have. So that shear of pin show you whether it has sheared off or not. So when the sheared off pin is removed from the coupler, then we need to replace the coupler. इसमें एक इंडिकेशन शो होता है, जब एक्सपेंड करेगा तो इंडिकेशन शो होगा, तो इसमें पिन है, वो अपना पिन Shear of pin. शेयर ऑफ पिन, indication Yeah, that I will show. It's in underneath that I will show. Maybe I will just quickly show. Yeah, so here. So this is a shear of pin that I will come later. So this is a shear indicator. You see this is connected to the coupler. Okay, and here this is removed from the coupler. You see this wire. Okay, this indicator is connected to this. It is removed from this coupler. Here you see the shear has happened here. So because of that, it is removed. And here you see it is connected to the coupler. You see this A. Can you mark it on the right side? Yeah. So Likewise, zoom it with the cursor from sort of inside. yeah. So here, yes. So here you see this is connected to the coupler,
the shear pin, and this is removed. Here you see. This is after shear. You see this one here, this area. ये शेयर पिन है, ठीक है, Shear indicator. शेयर इंडिकेटर. Is there any kind of practical demonstration also? Practical demonstration of shear. So practical demonstration of shear, we don't have 1,800 kilonewton to do that. There are risks already here. So if anyone of the No. So this crash scenario have that is a dedicated test setup we should have. But this has been already conducted here, not even in our in-house. It's in our Switzerland facility. We have this test facility. So where our our team and RDSO team have witnessed the test, dynamic test. So to show 1,800 kilonewton and absorption of force 60 kilojoules, it's not simple to show. We have a lot of arrangements and everything all to be followed. It's not a simple test we can show it. So it's like you say, it's a very expensive test for the shear of. Basically, so I don't just want to observe the test. Just if there are. Yeah, if there is a coupler, I will show you what is the shear pin in it. Okay. Okay, coupler is yeah. okay. So then I will show you in the practical session. Then I will show you. बेसिकली आरसीएफ ये टेस्ट वर्दी टेस्ट करता है. अभी ये टेस्ट वर्दी कोचेस बने हैं तो फिर ट्रायल के गए हैं, ये टेस्ट होते हैं. बल्कि अगर डिफॉर्मेशन ट्यूब अगर रास्ते में कहीं किसी वजह से मान लो पैर से ये हो गई है सर 1800 न्यूटन हो जाता है फिट है. अगर हो गया उसके बाद तो चलाना सेफ है क्या, अपने डेस्टिनेशन तक जा सकता है? नहीं, वो तो एक्सपेंड कर गया ना, पीछे क्रैश हो गया, एक्सपेंड हो गया. हाँ. They were asking that if the different tube will expand, then we can use or not. Yeah. So once the deformation tubes are expanded, so we can use for rescue scenario. Because the crashes as per the standard a crash scenario 15227, so which is a P1 category, so it's around 36 kilometer per hour. So Speed है, अगर 26 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन चली. 36. हाँ 36. मतलब हमारे डेस्टिनेशन तक Yeah, 26. Yeah. Sorry. So sorry, that speed we met. Then beyond that, if something happened, then we have a rescue scenario. So during the rescue scenario, we have to where the tension loads without passengers and everything, 600 kilonewton it will take. 640, 670. 670 kilonewton it can withstand for the tension. बिना पैसेंजर Rescue. वो तो फिर Speed. Which one? What was speed? Speed is a rescue scenario, so it's a very 10 kilometers like that. 10 or 36. 10. No. This is for rescue scenario. For rescue के लिए 10. So for a rescue, you won't speed much, right? So 10 kilometers per. Shunting is 3 kilometers. 23. Yeah, 2 to 3. इसमें हमें जो डिफॉर्मेशन रहता था वो यूजलेस है. Right? आपसे डिफॉर्मेशन हम तो ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे ना. हाँ, नहीं बोला 10 kpm ये जब 10 kpm स्पीड में आप हटाइए ब्लॉक सेक्शन कर लिया. तो इसका तो शंटिंग के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा. मान लो इंट्रोल में हो जाता है तो जो मेनली हमारे शंटिंग लोग हैं उसमें किसी भी कपलर नहीं होगा. Sorry? शंटिंग पर्पस पे कैसे? Yeah, so shunting, we have a locus have a ARR gauge, right? So we have a type 10 gate for an entire rack. So we have a adapters that I will come. So we have a adapters to connect this type 10 gate to ARR gauge. Okay. So here this is a support plate. So this support plate we have underneath to arrange a packet. So here we have this slots. So this slots we have the deformation tube arrangements. So this will lock the deformation tube. Okay. So this will lock, and this is it's a taper arrangement to lock the underframe. I mean the pocket
arrangement in the our underbody. ये सपोर्ट प्लेट है और सपोर्ट प्लेट है, ये डिफॉर्मेशन ट्यूब को लॉक करके रखती है. Okay, so it's and it is very important because these four bolts having the requirement of the load carrying and I mean the tested value. So it's a mandatory use 10.9 M16 and the torques as shown. So it's a 200 plus 15 Newton. Positive. इसमें टॉप लगेगा आपका 200 न्यूटन का टॉप लगेगा जब उसको टाइटनिंग करेंगे. And also the periodic inspection is also must carry. So this is a supporting device as I mentioned. So this is a supporting device that we have. It's like these springs are preloaded. Because of this preloaded, it has some deflection during the coupler movements on the vertical support, and also it is it will support when the coupler is not coupled to the other coupler. Okay, so these springs are preloaded, and we will have the capacity to withstand the coupler weight without when they are not connected to the other coupler. Dimensions of beer plate. Dimension of wear plate, I think it's about 20, but there is a 3 mm wear allowed, so that I will show you. Okay, so 3 mm wear is allowed. Total thickness Thickness, sorry? Extender कितना होता है? Thickness is about this is the thickness where we have, this is extension. So here it's a kind of a step. Extender thickness क्या है? This thickness around 8 to 10 mm it is there. So this is a step 8 to 10 mm. Condemning? Sorry? Condemning limit? Condom is 3 mm. Yeah. Okay, so any questions so far? So next we will show you the coupling, component installation. Any questions so far? कोई क्वेश्चन है? सपोर्टिंग डिवाइस में जो स्प्रिंग प्रीलोडेड है, Yeah. इसके नीचे जो नट लगे रहते हैं, Yes. वो बहुत बार एलएचबी में हमने देखा कि या तो वो लूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या टूट जाता है बीच में. तो इसमें कोई इसका आगे कोई इसमें दिया है एक्स्ट्रा सेफ्टी, या वो निकले ना या टूटे ना. अगर इन केस अगर टूट भी जाता है या नीचे गिर जाते हैं इसके बोर्ड, तो फिर इसको चलाना सेफ है या इसको डिटैच कराना पड़ेगा? क्या आपको जैसे वाशिंग लाइन Supporting plate है, ये वाशिंग लाइन sometimes the old well broken and fall. So is there any safety? Bolt how you fall, because we have a stopper here. अब वो नीचे गिर जाते हैं. Sorry. You have to get Sure. So उसके अंदर ही उसके स्प्रिंग के अंदर ही होते हैं, लेकिन वो अंदर ही गिर जाते हैं. आप इसी बोर्ड की बात कर रहे हैं. जिसमें क्या है ना, हमने ये पहले प्रॉब्लम थी, इसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिया है ऑलरेडी. हमारे स्पेशल कपलर में इसमें लॉकनट दिया है, प्लस एक डाउन साइड में एक डबल पिन डाल दिया है. तो पहले डबल पिन टूटेगा, उसके बाद लॉकनट है वो लॉक ही रहेगा. अगर वो भी इन केस उसका लॉकनट का जो लॉकिंग सिस्टम है जो प्लास्टिक रहता है वो खराब हो जाएगा, तब ये खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा. तो आपने देखा भी होगा एलएचबी में या बाकी जगह. हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कंपनियों में है प्रॉब्लम, बट अभी ये खत्म, जीरो हो चुका है हमारे लास्ट 7 years से कोई प्रॉब्लम. कई बार तो सर ये जो ऊपर से बोर्ड लग रहा है ये भी बीच में से टूट जाता है, बट हमारे में ये चीजें नहीं है. चलाने के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है. जब कपल होता है ना आपका कोस्ट टू कोस्ट, तो इसको जो मैक्सिमम हाइट है वो अब तक नहीं जा पाता, तो चलाने में ऐसा कोई इश्यू नहीं है. और अगर ये खुल के भी गिर भी जाएगा तब भी कोई इश्यू नहीं है, कपल कंडीशन में. बट फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आती है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है. आपकी वो प्रॉब्लम है मुझे पता है, बट फैमिली में नहीं आती. ठीक है. फैमिली के एक भी कपलर में, मैंने बोला ना, लास्ट 7 years से अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं है पूरे इंडियन रेट. okay, so we move for next. थोड़ा बहुत आइडिया. Okay, so next
we will go through the installation procedure. So how the coupler to be mounted on the car body. So one thing before we go to the installation, so as I mentioned, the safety is very important. Whether it's during a coupling scenario or uncoupling scenario or during the installation, so the safety is must. So always please use the PPEs and take the respective PPEs and use the lights, proper lights, and use the lifts, cranes, and whatever the safety equipments and the fastness, I mean the tool sets, whatever the describes in our manual. So this is a mandatory requirement to do any installation or any work. So again and again I'm repeating because we focus on the safety. Okay, so this arrangements. So start with this is a car body under frame. So we have a pocket here. So this is start with the draft gear arrangement first to the car body. Just start with the draft gear arrangement to the car body first, and so this pocket we have, and this is arrangement not with this support plate, but I will show you a video so where it will explain the complete picture. Okay, and we have a grease equivalent to the threads and apply the external bolts, and this is a M16 into 80 fasteners to arrange this first for this area, and we have a length bolts here for the support plate. Okay, so as I mentioned, the support plate, the housing assembly is first fixed to the curve frame. Play the video. Video. Yes, just give a few minutes. So I will show you a video. So where it shows how the coupler is being mounted one by one. So then it will be easy to explain. एक चीज पूछना था जो पहले जो सीबीसी टू सीबीसी के बीच में जो वर्टिकल मूवमेंट होता था 65 या 60 के लगभग, तो इसमें वो कैसे मैनेज होता है? मतलब ये इस ड्राफ्ट गियर में सीबीसी में ये कैसे मैनेज करता है वर्टिकल मूवमेंट? नहीं नहीं, पहले उसमें क्या था, नकल टू नकल कपलिंग। नकल टू नकल था तो ठीक है, वहां पे प्ले था। होता था। अभी क्या है, ये जो कपलर है, जो कपलर हेड है वो ऑटोमेटिक, और उसके अंदर जो इंसर्ट होने के बाद वहां पे प्ले नहीं है। जब ये वो मैनेज करेंगे जो इलास्टोमेरिक पैड है, जो इलास्टोमेरिक पैड है दोनों ड्राफ्ट गियर में, वो एब्जॉर्ब करेगा उसको। वो है इसमें। पहले भी क्या था, पहले जो ड्राफ्ट गेयर और जो कपलर सैंक है, वहाँ पे एक सेंटर पिन डलता था, उसके साथ में कनेक्टिंग होती थी, वहाँ पे प्ले वो मैनेज होती थी। बट इसमें जो आपका सैंक है, सैंक के साथ में जो 3-4 पैड हैं, वहाँ पे जो रोड है, रोड के बीच में एक बेरिंग दिया हुआ है, तो वो मेटल पीस है, वो कंट्रोल कर रहा है वहाँ पे, जो आपका 90 What's the question? वर्टिकल मूवमेंट So movement or misalignment? Vertical movement. Misalignment. So misalignment we have 70 mm plus or minus 70 mm. So this is as per standard for the Titan gate, vertical misalignment. वो है, इसमें भी फीचर है। वर्टिकल ऑक्सीजन विजुअल सपोर्ट Yeah. Yes.
No, it's a coupler access to coupler access. For center. Yeah, for center. For center. सर फिर इसका राइडिंग इंडेक्स कम हुआ होगा तो ये राइडिंग इंडेक्स कितना है सर इसका? रिपीट करेंगे सर? सर ये अमृत भारत ट्रेन के लिए जब कपलर मॉडिफिकेशन हुआ है सर तो इसका राइडिंग इंडेक्स कितना हो गया अभी सर? What's the riding index of riding index? riding index Riding index for higher cost and condition 2.9. राइडिंग Riding index 0.5 बता ASB के लिए इसमें कितना और क्या होगा इसमें? 2.5 है तो इसमें कंफर्ट होगा तो बढ़ गया ना, लेकिन देखो बिल्कुल होगा 2.1 होगा नीचे आएगा। नीचे है, ओके। अभी बिजली हो गया हो। वो तो आगे चल के है, मतलब ये होगा। No. Yes. Sir, good morning. Sir, good morning. Yes, sir. Good morning. So here I'll show you how the installation is we have to do. So as I mentioned, so this trap gear arrangement is first mounted to the car body like this. So with our lifts and any lift equipments, and then moved like this to for the holes. So this is the first arrangement, and we have to lift here just to hold until we fasten. So here this area to be loaded. Okay, otherwise we don't have a vertical support here, then it will fall down. So we have to load it. Okay, at this front area until we fasten the this back. So I mean this draft gear arrangement. So like this, first the fasteners are arranged. Then we use the longest, as I mentioned. So we have M16 shorter one and a longer one. So the longer pins are used for the support plate at the back side. Okay, the wedge arrangement we have. So that where we have to use the longer holes, and you show this. Yeah. So this is how the arrangement will be. So then we fasten that one. Okay. So now at this condition, you see now the back end of this coupler is arrested with the six fasteners, and now this front end is may overhang. So that's why what we do, as I mentioned, it has to be lifted until we install this install this support. Yeah. Okay. So now once we assemble the draft gear arrangements, then we use the vertical spring support on the front side. Okay, with the fasteners, and we have a lock washer, and so then the copper head we have to take place, and we have to also keep in load, in load condition, and we have to arrange in such a way in the both alignment. So where we have alignment, you see this, there is a pin and there is a slot. So this will give you an alignment to the head to this draft gear attachment. If you see this, can you see this is there is an pin? I'll show you.
Yeah, so here we have a slot. So this will give you an arrangement to the. सर आप लोगों को समझ में आया? एक्चुअली ड्राफ्ट गियर को इंसर्ट करने के बाद उसमें आपने प्लेट नीचे जो प्लेट है उसको माउंट कर दी, फिक्स कर दी। उसके बाद आपको इसको लिफ्ट करके रखना है, ऊपर लिफ्ट करके रखना है। उसके बाद फिर आप वर्टिकल सपोर्ट असेंबली लगा फिट कर दोगे। यहाँ पे माउंटिंग बोल्ट है, उसके ऊपर 240 न्यूटन मीटर ना और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको अप्लाई करना है। वो एश्योरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें जर्क होता है गाड़ी के अंदर, तो वो प्ले में वो खुलेगा। उसके बाद जब कपलर हेड को, इसको टाइप 10 बोलते हैं, जैसे उसको ARX बोलते थे, इसको टाइप 10 हेड बोलते हैं, टाइप 10। जब इसको ड्राफ्ट गियर के साथ में फिक्स करेंगे तो बीच में जो ये असेंबली है इसको बोलते हैं कोन बोलते हैं इसको। तो कोन क्या करेगी, वो दोनों को अलाइनमेंट करेगी, तो दोनों को अलाइन करके फिक्स करेगी। अगर कोन नहीं है यहाँ पे तो वो उसकी जो माउंटिंग है वो डिस्प्लेस हो सकती है, तो इसलिए उसको सेंटर में रखने के लिए कोन दिया हुआ है। उसके साथ करके फिर आपको ये वाली जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से आपको टाइट करना है। मफ टाइप कपलिंग बोलते हैं इसको, मफ टाइप कपलिंग बोलते हैं। तो मफ टाइप कपलिंग को आपको इसको फिट करना है। Yeah, so here is this. So here this is how it arrangement. Then we have a muff coupler of M16. So the torque is already mentioned. So 200 plus. Again, I play this. इसमें एक और चीज है, इन केस आपको मफ कपलिंग कभी खोलना पड़ेगा तो इसको हार्डवेयर आपको नया भी यूज करना है। हार्डवेयर आपको इसमें ऑलवेज नया यूज करना है, आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए। तो आपके पास हार्डवेयर, टॉर्क रेंज और टॉर्क वैल्यू हमेशा रहनी चाहिए आपके पास। Okay, so in the procedure, so I will explain so where to apply grease and all, so that I will show you. Then during the installation, you must apply the grease at this area. So for the muff coupling area for the installation and the faces. Okay. Which type? KP2K. KP or equivalent. KP2K Or equivalent. KP2K. So the KP2K is our recommended, or similar is the equivalent grease then used. Okay, I will play again a video from the first. So maybe once again I repeat. So for the run this. So first we fix the. Can you repeat these points specially? Yeah, I will. Special points. I will come. We have these points. So this is M20 for vertical screw. And this is M16 again. Okay, so this is that was the final assembly in the cardboard. So any questions with this? Okay. Okay, so here we just explain. So what is the same is in a full letters. So instead of explain all these things, so I just shown a video. So where we have the alignment of muff couplers and make sure guide pin of this muff coupler is arranged, and the Loctite for the threads of 4 bolts. For the 4 holes for the Loctite, and tighten the muff couplings. For muff couplings, we apply a 243 Loctite. That anyhow, all these informations are available in our manuals. But here I am just explaining. So here we have a Loctite 243 4 holes,
and tighten the muff coupling halves and M16 into 170, that's a size. And we have a prevalent torque nuts also we have used with in our muff coupler. And once everything is alright, and we have a some gaps will be there, then that is also mentioned in our manual, and we will ensure showing. And in the other way we have this array, maybe because of this image I couldn't zoom it, maybe I'll try to zoom. Yeah, you see, so this is how they after insulation, it's just a view rotated for idea the easy understanding purpose. So this is how the view is factored. Okay, so as I mentioned, so KP2K grease are equivalent. So mating surface, as I mentioned, and inside the muff coupling at mating surface and pin, and our mating surface as a spacer tip. So all the mating surfaces for the muff couplers, the KP2K grease are equivalent to be used. Okay, so our recommendation is for our products to use a KP2K. So anyhow, I will have a separate slide for the where to apply the greases. So next is a coupling and uncoupling procedure. So this is one main important topic that we will discuss. So before that, I will show you again the safety precaution. So when you do coupling and uncoupling, so please ensure proper lightings are there. Okay, proper lightings are there, and don't stand with the coupler transition area, I mean transversal area, because you are aware more than me, but still I'm as a training under training the safety seasons, and I have to mention again. So use the proper lighting and don't stand where the coupler faces are meeting. So in front of the, I mean between the cars. So this is a key safety requirements. Okay, so here the coupling procedure. Anyhow, I will have a I will show you the video, so how the couplings will happen and how to see whether the coupler is properly fitted, I mean properly coupled or not. So here we have to slow speed 1 to 3 kilometers between 0.5 meter distance between the cars, I mean couplers, and check the alignment position of the coupler centers and couplers, because this Titan head has a EN 16019 standard, so the gathering range specifies with that. Okay, so the same ensure the misalignment between the two cars and start the coupling. Okay, so with the speed of 1 to 3 kilometers. So once the couplers are coupled properly, so the both halves have some identification that I will show you. So proper face to face have coupled. Okay, so this is a coupling coupling procedure. Yeah, so this is how it should be. Okay, so here check the release bar position. This is very important. So before you start coupling, first you should understand the releasing bar position, whether it's a outside or inside. So this is outside. This is now at the outside, which means the coupler is not coupled. Coupler is not coupled, and here there is a link I mentioned right in the past. So the link is inside. Link is inside. So during the coupled condition, so this release bar go inside, and link is connected to the opposite coupler. Okay, so just to ensure for your identification, whenever you start the coupler, a coupling procedure, please note this releasing bar. Okay, so this is a one cart coupler, and this is a standing train, and where we have a coupler. Still, here you see in standing train also we have the release bar is outside, and our moving train also we have release bar outside.
So when we move the couples towards the standing cards by 3 kmph, and it will be locked inside. So after coupling, so you see this release bar which is inside. Release bar is inside, and you see, so this is the release bar gone inside the coupler head, which means the coupler is fully coupled. तो जैसे हम सीबीसी कपलर में टेल टेल देखते थे ना, कपल होने के बाद जो रोटरी है उसमें क्लियरेंस होना चाहिए, वैसे इसमें क्या है, जब अनकपलिंग कंडीशन में होगा तो जो ये बार है उसकी जो पोजीशन है ऐसे रहेगी स्ट्रेट। अब इसके स्टेट में इसको हम आउटसाइड बोल रहे हैं दोनों कपलर की। जब इसको कपल कर देंगे तो जो ये रिलीज बार है वो एंगल में हो जाएगा, मतलब अभी ये 90 डिग्री में है तो ये आपका 45 डिग्री। This is release. So only inside. This is separate. This is horn. Horn. This is horn. So not this one. This is a release bar. This is हाँ. और ये साइड में जो हाँ. साइड में रिलीज बार है ये आउटसाइड आ जाएगा, निकल जाएगा, मतलब बाहर Inside. So this releasing bar uncoupled is outside, coupled is inside. Okay. Link inside a opposite coupler. Both coupler will have the same mechanism. Link will have to the opposite side. सर बफर हाइट डिफरेंस के टाइम पर क्या होगा? Yeah. Yes, sir. सर दो कुछ का जब बफर हाइट डिफरेंस होगा उस टाइम पे कपलिंग कैसे किया जाएगा? Buffer height कैसे देंगे? Buffer height. How can we measure buffer height? Yeah, that's what I said. 70 mm. 70 mm between the from From rail to center of the buffer. center position. सर बफर हाइट इसमें जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये जो फोन है, इस फोन का जो सेंटर पॉइंट है वहां से हम ट्रैक से उसकी बफर हाइट लेते हैं। सेंटर मतलब हाँ Center. So this the center is पे लेते हैं। outside. और ये जो बफर हाइट है कपलिंग के पहले ही हमें सेट करनी पड़ेगी, या तो वर्टिकल सपोर्ट से या तो कपलर से। नहीं, मान लीजिए लाइन पे हमने कपल करना है, लाइन में यह कर्व है, हाँ कर्व पे तो ये होगा ही नहीं। परमिसिबल है, मतलब कर्व पे नहीं होगा, मतलब कर्व बहुत ज्यादा है तो नहीं होगा, वो भी एक परमिसिबल लिमिट है, उस डिग्री पे आप कर सकते हो उसको। कहाँ? 12 डिग्री हो So Center. के अंदर लेवल भी है ट्रैक का, अगर मान लीजिए so this is the center. ट्रैक में भी लेवल नहीं है कोई। So this is the center and this horizontal. This is a M हॉरिजॉन्टल point. वर्टिकल दोनों में एक परमिसिबल लिमिट है। नहीं लेकिन मान लीजिए हम कपल करना है तो ट्रैक लेवल में नहीं है, मान लीजिए कई बार होता है कि अप डाउन होता है, जैसे सीपीसी में थोड़ा सा ज्यादा था, इसमें तो बहुत कम है क्योंकि पार्ट है बहुत ही छोटा है। वही आपने बताया। So this is the center M point of this vertical and this horizontal. This is the center of this M. No, they are asking what is the permissible limit? Yeah. So vertical is 70 mm plus or minus. Yes. From center. From center. सर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से वर्टिकल जो हाइट है 70 mm, ऊपर और नीचे होगा तो वो कपल कर लेगा। कुल मिला के अगर बोला जाए ना, जो आपका पहले एक्सट्रैक्ट कपलर था सेम पैरामीटर है, जो आपको जो ना वो सब कुछ चीज सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ओनली जो हेड आपको नया दिख रहा है प्लस इसका जो ड्राफ्ट गियर पॉकेट ये चीजें अलग हैं, वो जो डायमेंशन हाइट वो सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं। जी डैमेज तो नहीं होता है। नहीं डैमेज। इसके गेज क्या होगा? इसकी गेज आ गए कपल करने में 4 से 5 स्टेप लिए लेता है, उसका क्या, उससे बचने के लिए क्या करना? सर 4 से 5 अटेम्प्ट तो नहीं लेता है, एक ही अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। नहीं, हम देखे हैं, करवाया है, RLCC पटना में है ना? ओके 4 से 5 अटेम्प्ट लिया, लास्ट में वहाँ बेबी वाले भी थे, वही परेशान हो गए कि क्या हुआ। सर वो डेलर का था, एक डेलर और बेटर कौन सा? फैमिली करता है, दोनों फैमिली का और बस फैमिली का इज आस्किंग फॉर दिस डूइंग कपल 4-5 times is try to couple but after 5-6-7 times release करना।
Okay, so that I will tell you what is the issue. So sometimes there are some troubleshooting also we have in our manual. So you have to just go through the manual. So sometimes, so some external burrs or some any foreign elements which are inside the coupler or inside the mating area, so which may cause this issue. So we have to remove that element and remove the dust or any element, foreign element that we have to remove. हाई अटेम्प्ट के बाद क्यों हो गया ये विदाउट कोई वर्क किए हुए? That's when everything is okay. Okay. But it's you try to 5 times, but next 6 times is automatically stop. Yeah, so that's what I said. So it is the mechanism is any foreign elements that's is a Foreign element is nothing. nothing. So inside That that is facing problem. inside also, inside also. Inside. So it so between webpack to webpack coupler. Yes. Perfect. Okay, so because we haven't come across this situation because all the troubleshooting whatever we are in, we have a solution in our manual. So like what are the coupling to coupler and coupling, and also the thing is one thing the during the coupler and uncoupler, so we have to see which the force and also the speed. So like if as we mentioned, so 1 to 3 minutes it's like forces are not enough, then it will also will not couple. Okay. वो कैसे आप फैब्रिक पट्टी वहां पे थी जब वो फैब्रिक में नहीं पड़ा था मैंने नहीं तो कौन सी जगह की बात करें फैब्रिक पट्टी वहां पे थी वो भी फिट के ऊपर दोनों जगह देखा गया एक जगह तो सिंगल पोस्ट था सिक्लाइन लेकिन जब वो अटैच हुआ जब लोड पे आया वहां 10 पोस्ट में ब्रेकिंग लगा हुआ वो भी खत्म हो गया इधर से मारा तो फिर अटैच नहीं हुआ फिर तो उसका रिलीज बार बाहर से साइड लेना सब बाहर साइड में था तो फिर भी नहीं हो रहा था Sir, series अगर नहीं ये तीन से सर देखिए उसमें तीन चीजें हैं सर इन्वॉल्व होते हैं तो आपका रिलीज बार हो गया दूसरा आपके स्पीड ऑफ फोर्स हो गया ठीक है तीसरी चीज बराबर रहेगा इसलिए कि उधर आपका स्टॉपर लगा हुआ 10 कोच का ब्रेक लगा हुआ है खत्म हो गया उधर से फोर्स भी डाल रहा है फिर भी नहीं हो रहा वो सेंटर में था दोनों सेंटर वो तो एक बार जाएगा तो फिर सेंटर में जैसे अपने आप ले लेता है वो अपने आप ले लेता है ना सेंटर में जा रहा है फिर वाले ना चुना मैंने इसी काटा फिर मैंने हटाना है फिर से हटाना है ये समस्या हो गई एक ही बात करते हैं हाँ सुमन का बात करते हैं Okay, so here I show the coupling video. So this is taken at lab. So in front of reference, team from Adiso. So this has been taken. So here I will just play from the scratch. How you see the relating bar here. This is an outside and the link which is inside. Okay, so when maybe the link movement you cannot see, but you can see the release bar movement. Okay. Okay, so now the release bar gone inside. So which means the coupler is properly coupled and the faces of this both ears are material, and this is a guide bar that I mentioned. Sorry? Uncoupling I will tell. Uncoupling I will tell. बाहर आना चाहिए कि ये सिर्फ एक कोच का दोनों कुछ का है ना देखिए कपलर तो दो है ना आपके तो दोनों में मैकेनिज्म है अपना सेपरेट तो दोनों का होगा का बाहर रहेगा कब कर दे सकते पहले सीवीसी में सर एक ही को खोलने पे अनकपल हो जाता है। इसमें भी हो जाएगा सर एक खोलने से हो हो जाएगा
अगर लॉक अवस्था में इसको लॉक कर लिया तो कराएगा। सॉरी सर, नो लीवर अंदर ही है दोनों के, फिर अपन कपल करना चाह रहे हैं तो लॉक हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, दूसरे कॉल पे करना पड़ेगा। और एक अंदर एक बार है तो भी अपने खोलनी पड़ेगी। अनकपल में एक सर एक खोलेंगे तो अनकपल। Yeah, for uncoupling, one half is fine. So if you uncouple one coupler, He's asking for one more question. So in case this one coupler is closed coupler, another coupler is open position, is doing no. Both will be an uncoupled position only. position में ही रखना होगा तभी couple. It will not. So when you release, when you uncouple, it will automatically uncouple the position. So we cannot see the coupler is, because you cannot remove the coupler when it's coupled. So only you uncouple and release the couple. Okay. Yes sir. अलाइन हुआ है। वो गाइडेड फोन नहीं है ना इसमें। Guide 20 है। वो किधर है? I will show you. डिफरेंट डिजाइन है, टाइप 20 है। हाँ, अच्छा टाइप करना है, अच्छा टाइप करना है। But I will show you. इसका हॉर्न जो हाँ, हॉर्न I will show you. I will show you. So here you see, so this is a with the guide one at a train level. ஓகே அதான் லாக் ஆயிடுச்சு சார் அவ்வளோதான். Yes, we can test here for. ஓகே அதான் லாக் ஆயிடுச்சு சார் அவ்வளோதான். So this is how the coupler. So that's what the sorry. So that's how the coupling will work, and I will explain in detail. So this is the position of the coupling. So for uncoupling, so there is a lever. So this lever. So in the video you have seen the lever is connected to the coupler, but in our new design, so this lever is removable. Okay, removable. We have to keep it in the guard van. Then the uncoupling of lever. So this lever is used, and here you see the teeth. So here you see the teeth. Okay, so this lever should be engaged in the pin coupling pin. We have this teeth, and just show you. Okay, so here this coupling handle and this pin to be engaged, and we have to rotate this lever. Okay, so you see, so first the bottom. So here I just enlarged to see the position. So this position is to main pin, connect this lever, and it's a very simple, just to put and rotate. So you see this operator is standing here, and you just, this is a position of a coupled position. You see this is a coupled position, and they have to rotate towards a clockwise for uncoupling. Okay, so this is what, so here, so this operator is stand, this is a coupled position, and he has to move the connecting, coupling lever towards him, so about 60 degrees, then it will release. So you see this is a uncoupled position. So now we can release the couplers. सर आपका जो ड्रेन है उसमें डाल दिया है लगा हुआ? So they have to remove this handle after coupling. For after uncoupling, so it cannot stand. When you remove the handle, it will drop on. So
हर कपलर में होता है, आपने पूरी रैक में से निकाले हुए हैं लगे इसके जो रिलीज बार है ना, वो निकल जाता है। अनकपलिंग है। वो निकाला निकाल के रखिए आप, क्योंकि वो तो कोई भी खींच देगा तो अनकपल हो जाएगी। नहीं सर, बोल्ट नहीं भी लगा होगा, बोल्ट लगा भी होगा, उसको अगर किसी ने खींच दिया हो तो डिटैच हो जाएगा। अनकपलिंग है, अनकपलिंग है। ये अनकपलिंग, ये वाला ये नहीं बोल रहा मैं, इसको हम पकड़ के खींचते हैं ना तो निकल जाता है। नहीं सर, बोल्ट से आप निकाल लोगों बोल्ट से टाइट किया होगा। हाँ, दो बोल्ट्स। मेरा काम निकाल के नहीं देता सर, सेफ्टी पर्पस। दूसरे बोल्ट को निकाल के रखते हैं। ये गाइडलाइन आप दे दीजिए। सभी का निकालना है। वो हमको यहाँ दिखा क्या करना है, यहाँ कपल हैंडल है हमारे फिक्स। यहाँ पे ठीक है सर, यहाँ पे सॉरी, अलग है, उसमें लॉकिंग पिन है। सब वो आइडिया नहीं, वो डिजाइन होता है हमारे डिजाइन में हम बता सकते हैं। वो तो बीच में जो पूरा बना हुआ है उसको कैसे किसको लोगों के बीच में से वेस्टिब्यूल नहीं आपको इन्होंने खाली आप ये नहीं निकाला खोलोगे आप। अच्छा, वो बात करने के लिए जो आप गाड़ी के ऊपर रखो या लोको में रखो, कहीं भी कभी आपको अरेंजमेंट करना है तब आप बोल्ट लगाने चेक करवा देंगे। उससे जो पहला रैक निकला था यहाँ से, हर एक कपलर के अंदर ये हैंडल है, निकाल सकते हैं। बोला गया था कि वहाँ आप निकलवा दिया, जो भी है वहाँ लगा हुआ है सब। दो गाड़ी में सब पे लगा। दो गाड़ी में सर ये 2 नट तक है, ये फिक्सिंग तो होता है। So here, so अभी देखिए लंच के बाद अंदर आज दिखाएंगे हमारा कपलर जो है डलर का भी है yeah, I think sorry, guide, gap, two faces. Yes. So after coupling, no, after coupling it will match. It's a flatness of this front face is 0.5 mm. 0.5 mm. Sorry. 1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.5 mm of the each faces. So 1 mm is the 1 mm से यदि अधिक हुआ तो हम क्या करें? गाड़ी more than 5 mm gauge, which means the coupler is not coupled properly. So releasing bar is inside. So there we'll have a wear limit. Okay, for the components that comes under a maintenance. Okay, so periodic checklist after 3 years you have to check the link wear limit. So once it's a limit across it, then you have to change the head or the mechanism. You have to send it to overall for the mechanism. So the wear limit is also there. Then you have to check periodically. वो इस पे इंक्लाइनेशन पे भी डिपेंड करता है। देखा गया है कि वन साइड अधिक था, आपका 1 mm गैप दिख रहा था, एक साइड मैंने कि नील था, ये कैसे हो गया? So one side if it's more than wear limit, you have to change the head. 1 month is running this battery, only 1 month. 1 month. So just check the wear limit. Then if it's more than that, then we have to, because 1 month means it is how many times you are coupling and uncoupling. The wear will happen, not depends on the month. It depends on the how much application that we are using.
Yes. Okay. मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ। दूसरा केस वहीं पे एक में ज्यादा गैप देखा गया कि आपका 0.8 mm 7 mm तक चला गया दोनों कपलर के बीच में बेस तुरंत आपकी कंपनी के हेड को भेजेगा तो वहाँ से हुआ कि नहीं मैंने बिगाड़ी जाएगी सेपरेशन बना तो उसमें क्या प्ले प्ले था प्ले प्ले चलने के टाइम पे प्ले ऐसे ही प्ले जब रैक पड़ा बिगाड़ी बहुत से ना बोथ साइड में वन वे नहीं वन वे काउंट था कर्व के कारण खराब थी गाड़ी पर ज्यादा नहीं था लेकिन खराब आएगा खराब आएगा क्योंकि अंदर जो लिंक है ना उसका लॉकिंग लिंक है उसमें थोड़ी प्ले रहती है जब जब आपकी गाड़ी खराब पे होगी तो ऐसे होगा एक साइड से होगा इधर खराब होगा तो इधर होगा मतलब हल्का रहता है सर Yeah. So क्योंकि अंदर जो मेटिंग पार्ट है ना उसमें इटसेल्फ टॉलरेंस होती है एक 1 mm का जो टॉलरेंस आप बता रहे हैं वो कितने लोग आप no, no. So the face you're saying, but the in between parts. So we have up to 3 mm play will be there. So that is a between the wear limit when you check wear limit. So that's show the gauge will show the whether it's in or out. So that will show the part whether the head can be used or not. That will come later. Okay. Okay. So what is the maximum limit The place 3 mm up to 3 mm. So actual is 1.5 to 2 mm only, but we are just to trying to we are working on to increase to 3 mm. So at curve curve at curve no it will not. So I don't understand what is it in curve also. So due to the if the vertical the horizontal misalignment horizontal only, so it won't have that gap that what you say. So the flatness of this face is 0.5 mm 0.5 mm 1 mm will be there 1 mm. Okay, so this see, so this again I'm showing. So the release bar inside the handle position. So this is a coupled condition and release bar is outside and this handle position is the same direction, so which is a uncoupled condition. Okay, so this is a mandatory identification for coupling and uncoupling. So any questions on this? Okay, so as I mentioned, 60 degrees from the coupled position to uncoupled position clockwise we have to rotate. So this is again I show the position. So where pin and uncoupling lever action. So this will be there the first position of this lever and uncoupled initial position, and this is a coupled position. So next we will talk about adapter rescue coupler. So as you see, we have our Indian locomotives have a ARR H type, and our this new design has a type 10 head. So to adapt during rescue time, to adapt this two different heads and two different mechanism, we have a rescue couplers. So this is like typically a we have designed for a type 10 head and for the two valves have a different mechanism. So this adapter have two adaptability and it has a own nature design nature. It can adapt to both designs. Okay, so I will just come through. So yeah, you see this is a adapter for Amrit Bharat type 10 head. Okay, so this end one end is for type 10 head, our new design, and another end is for another half is for our ARR H type coupler. So these both halves are connected with the pin with the nut. I mean the pin. Okay, cotter pin. So this will be engaged. So first, when you have the adapter, it has the complete assembly. Okay, complete assembly. Then you have to dismantle first, release the pin, and you have to remove the pin, and you have to fix type pin head to the coupler one end, which means you have a handle here just to push. Then it's the same function as the it's a lightweight only. Then we can push. So this is a adapter, and once you fit it to the train like this, okay, once you fit it to the coupler head like this, and
we have to use the other half to the this adapter and couple to the error history. And also in the meantime, you can also use the vice versa. You can first fit to the error hitch, then you can also fit the this adapter first, and you can link. So this is how it will work. So this rescue coupler is mainly used for the rescue purpose. Okay, so which has a very less load capacity. We cannot run more speeds. Okay, How much is it? so the rescue speed, how much you use? 10 to 10 kmph. so typically how much speed you use for rescue purpose? 10, 10, 15 each. 10, 15, yeah, that's it. It is adaptable for that speed only. So not, we can full speed now. So only for rescue purpose. That's why it's called a rescue coupler. ये तो आपके पास मिला हुआ है या अभी प्रैक्टिस आ रहा So we call it as an adapter or rescue coupler. Okay. तो स्पेशल बनाया हुआ कोच को काट दिया नहीं इस टाइप का Very cheap. Okay, so shall we move for next slide? Any questions? कितना लोड क्लियर कर सकता है टेंशन का मतलब Tensile is, I think that is how much load is very less around, how to say? I mean how many coaches we can put in this sort of Yeah, so this is for one day front, whereas rest will take care by the other couplers, right? So this is for the front coupler. Okay. only use that first coach. Yeah, only use it first coach, but the rest are like already coupled. No? Coupler in each for one coach. Yeah, one coach. The only the where the locomotive is connected to the coach. That's it. Okay, so here we talk about the daily checks and maintenance. Okay, so here, as I mentioned, the main thing is shear indicator. Shear indicator, as I mentioned. No, one coach fixed. वो ये बता रहे हैं कि मान लो लोगो है या कोच है कोच पीछे लगी हुई है हाँ हाँ और उसके आगे में एलएचवी लगी हुई है हाँ हाँ तो ऊपर में भी 10 कोच का लोड पड़ा है हाँ। तो कितना कोच का लोड साइन करेगा ये संटिंग के लिए है मैं आपका पॉइंट समझ गया ये संटिंग के लिए मान लो अमृत भारत खड़े हैं 22 कोच हैं वो खड़े हैं उसमें से आपको 4 कोच काटने हैं ठीक है 4 कोच आपने काट लिया बट उसके बाद आपके पास अमृत भारत का लोगो नहीं तो आप कैसे संटिंग करो उसको लगा वो एग्जिस्टिंग एलएचबी कोच है उसमें एआरएस टाइप कपलर है उस कपलर के साथ में इसको आप अटैच कर दोगे ये ऐसे अटैच हो जाएगा ये सीबीसी है ये अटैच होगा तो इस कपलर से आप वो 4 कोच संट कर सकते हो 2 कोच संट कर सकते हो तो संटिंग के लिए आप पूरा रैक भी कर सकते हो ऐसा नहीं है पूरा रैक यस आरसीएफ में करते हैं हम लोग उससे होता है हाँ हाँ एडाप्टर से हमारा जहाँ पे डिपो है बट उसको रनिंग में नहीं वो सिर्फ संटिंग है संटिंग है विद द रेस्क्यू स्पीड हमारा डिपो जो है 8 किलोमीटर दूर है अगर हमारा कोई अपने बात का कोच डीवीएस होता है और हम शंट करते हैं तो हमें सिकलाइन के लिए 8 किलोमीटर ट्रैवल कराना पड़ेगा इसको वो भी ब्लॉक सेक्शन में भेज के तो आप कह रहे हो कि 10 की स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते हैं नहीं उससे ज्यादा नहीं तो वो फिर ब्लॉक सेक्शन में भी 10 की स्पीड उसको फिर उसको संटिंग मतलब ये संटिंग आपका जो डिपो है डिपो के अंदर ही आप उसको बाहर लेके जाएंगे तो फिर आपको प्रॉपर्ली लोको चाहिए नहीं लोको तो है लोको तो एलएचबी का मान लो जो नॉर्मल लोको आप चलते हैं मान लो कोई डब्ल्यूएपी 7 है कोई भी है उसके साथ ही अटैच तो हो ही जाएगा हाँ अटैच तो हो जाएगा बट आप उसको लंबा लेके जाओगे मतलब वो सही नहीं है क्योंकि रेस्क्यू स्पीड है अगर एक लाइन से दूसरी लाइन पे डालना है ये रेस्क्यू स्पीड Okay, so when we talk about shear indicator, so this is what as I mentioned. So here you see, so this is one of the mandatory daily checks before the trip. Before the trip, so you see, so this is before shear,
and this is a after shear. So this release pin has removed from the coupler. So this indicator shows. You see this wire which is connected to the coupler, and here it is removed. So here this is where shear happened, and because of this release screw has fallen out. Okay, so this is a mandatory check. So because of sometimes some unknown high level forces, because of the shear might have happened, so which we may not think, okay, that there was a crash, but due to high level forces more than 1800 kilonewton, then it will happen. So you just think about our normal operation, it's 600 kilonewton. It's just a 3 times force we require to crash this screw. So but however, we need to take care of these pins, this identification pins. Okay. And so this is about the greasing points. So as I mentioned earlier, the greasing points. So the coupling links, you see. So this is the coupling link. I mentioned during the coupler, this will move towards the opposite coupler. So where we need the greasing, and also main pin grease nipple is there where you can grease, and also hook plate where we need greasing, and the stamp surface where we have a stamping that release bar mechanism and the release bar. So these are all the areas where we need the greasing. So these all are available in our manuals. So it's the same I mentioned in our manual. And so this is what the wear gauge check procedure. Okay, so it is the wear gauge for the Titan head. Okay, it's a simple gauge to fix it, and we have to pull this lever and it will engage to the coupler, and this indicator shows limit the whether it's in or out. In the wear limit is inside means we can use the coupler head, and it is outside then we cannot use the coupler head, and we have to change the coupler head. Okay, so that's what I mentioned. So the wear limit. So this is also one of the key checks. I will show you when to check the wear limit. Okay, so in our maintenance manual, the proper procedure with the description of how much mm to be maintained and how to operate this. Like this, everything is available. And okay, so I'll just so this is a checks wear of the Titan hand using the gauge which I mentioned. So 3 years, that is our recommendation. But if we feel, as you are saying, so because of more operating or more, if a wear is more, then during that time you can check. Okay, but even in a normal operation condition, our recommendation is to use 3 years. Okay, and check any missing fastener springs that's Titan head which is within the head. Then you have to check, and check muff coupling assembly proper fitment including fastener. It's a mandatory during the trip, as I mentioned, because the muff coupler is a key element to transfer the forces and connect the two modules of the coupler. So the muff coupler fasteners are maintained and the torques are applied properly. That is a very important check that we have to do. And guide cone assembly one half of the draft gear. Check the presence. Okay, when there is some guide cone assembly, one of the draft gear, the guide cone is available or not. That also at a check, and the pads. So when you do the one important thing, you should aware. Don't do any greasing to the pads. Elastomer pads. Don't do any greasing. Okay, don't do any greasing, and the pads are the elastomic pads are the discs between the plates. Don't do any greasings. Okay, so it is mentioned there. Just missed to mention. Just okay. So and next is
pad damage or cracks should not be any oil or grease pads in mounting areas. So as I mentioned, the pads shelf life is about 6 years, but at 3 years you have to check whether cracks are formed there. Okay, so that you have to mention, check the pads, elastomeric pads, and any solid or any gap between the pads or mating pads in assembled condition. Where if you see the elastomeric pad, as I mentioned, it will absorb the energy like a plastic, I mean rubber, so it will compress and expand. So when you have the, as I mentioned, it's a 6 years of shelf life, and during the 6 years, if it will the forces are there, then there will be some gaps between the disc and the elastomeric pads, and also the pads will come as a solid. So when it comes a solid, it will not absorb the energy. So for that, this pads, when it comes a solid, then we have to replace. So that's the typical life of the pad is 6 years. So you have to check, that is a one condition, and check any damage of any metal parts. So that is a maintenance 1.5. I mean, these are the checks. Okay, and any damage thread in the drawbar assembly special nut, that's also 6 years. Check any locking ring, any other damage or missing. These are the checks. Okay, that we have to do. And wear amount of the wear limit fitted to the figure and the beam part of the supporting level. And this is also the wear limit, as I mentioned, 3 mm. That we also check. And check for the mounting fasteners torque mark. So torque mark, as you are aware that you are following that. So all the torque marks you check during the trip, right? So that's the same. Okay, and if you see any torques are missing, then you have to apply proper tools and torques with as per our recommended torque values. Okay, like 180 to 200 for the muff copper and M16 bolts, and M20 for 400 to 450 Newton meters. Is there any use of graphite powder or graphite spray? For what? Like in CCB, we are using graphite powder in the knuckle cutting parts. In this No, so it's a greasing. only liquid. Yes. Yes. तो इसमें ग्रेफाइट का यूज नहीं करना है. जैसे हम सीसीबी में नकल पे लॉक पे ग्रेफाइट यूज करते थे, तो इसमें नहीं ग्रेफाइट यूज नहीं करना. हाँ जी सर, ग्रीसिंग. वहाँ फिनिशिंग के लिए हम ग्रेफाइट यूज करते हैं, यहाँ कहीं यूज नहीं करना. Okay, so CBC glaze होता है, we are limit को lock पे करेंगे. कंटूर चेक, टेस्ट कंटूर टेस्ट करते हैं. कंटूर गेज होता है, उस तरह का इसमें कुछ है. इसमें दिखाया ना सर, जैसे उसमें अपना भी गेज है, नकल लॉक जो फेस को चेक करने के लिए, और गेज ये गेज है सर. ये गेज है, जैसे आप यहाँ से होल्ड करके हाथ से उसके फेस के ऊपर लगाओगे तो जो हैंडल है. when you put this and you have to rotate this and you have to handle towards us and push, you have to rotate this screw mechanism will show you the limits. Okay, so with this indicator shows whether it's in or out. So in means where limits are inside the specification, so that you can use the coupler, and if it's outside, then it will show the, if it's out, then you have to replace the coupler head. And in video available on This is maintenance. The instruction has all the procedure how to apply each one step by step. It has a push. I mean procedure. So you can display now. Which one? The procedure, testing procedure. Test procedure. It is not transferred. I have sent to him. No, think that. इसमें सिर्फ एक सिंगल गेज का टेस्ट है. हाँ, इसमें क्या एक हुक है अंदर और एक लॉक है, जो उसका फेस से कितना डिस्टेंस है, कितना मतलब वो जितना अगर बढ़ गया तो वो जैसे इसको प्रेस करेंगे ना, वो लिमिट बताएगा इतना है, तो उसका डिस्टेंस बाहर फेस से इतना डिस्टेंस है. अगर वो मोर देन लिमिट है तो हेड आपको चेंज करना है, पूरा हेड चेंज करना. जैसे एलएसपी के पहले सीबीसी में काफी टेस्ट किए थे. हाँ, बहुत ज्यादा टेस्ट. सीसी हाँ, बहुत ज्यादा अंकल का था, फेस का रॉकेट का था. तो इसमें कितना? इसमें एक है,
इसका भी नंबर है शायद मिलेगा। हुक सेंटर पिन का और हुक का दोनों का जो लॉकिंग हुक है ये लॉकिंग हुक जो अभी पीछे फोटो में देखा ना जब हैंडल से हम ओपन करते हैं तो अंदर एक हुक ओपन होता है सामने वाले का पिन होता है जब वो कपल हो जाएंगे तो वो क्या है उसको लॉक कर देगा तो उन दोनों का फेस से उन दोनों का डिस्टेंस कितना है उसमें वियर कितना हुआ है तो उसको इंश्योर करने के लिए की सर कोच पे जाकर प्रैक्टिकल करेंगे। गेज हमारे पास है गेज नहीं बोलो सर आज से अपना गेज नहीं क्योंकि आप जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि मिलेंगे ये सारा सामान मिलेगा कहाँ ये आपको हमसे मिलेगा ये डिमांड डालनी पड़ेगी डिमांड डालनी पड़ेगी आपको टच स्क्रीन की क्योंकि ये हम इसका मैन्युफैक्चरर नहीं है हम भी इसका मैन्युफैक्चर नहीं करते जैसे वो गेज थे वो अपना के गेज थे तो हम भी अपना से लेके आपको तो ऐसे ही आपको हमारी जो ऑफर से प्रोवाइड कर रही है तो ये हम लोग को मैन्युफैक्चर में ये स्टैंडर्ड आता है ये सेलेक्टर तो हम लोग पीयू को दे रहे हैं एक सेट के साथ में ये आप पीयू से ले सकते हैं ये वाले गेज सिर्फ फैब्रिक के लिए है। एक रैक के साथ एक अडप्टर हम लोग को दे रहे हैं एज पर पीयू में तो आपको वहां से मिल जाएगा हमारे पास आया है एक रेक के साथ नहीं कोच नहीं रैक एक ट्रैक में मेरा 5 फैब्रिक है वो पीयू से आपको कोऑर्डिनेट जैसे हमने यहाँ पर एक रैक के लिए अप्लाई किया है मटेरियल तो यहाँ पे एक ट्रैक में सर आपका टेक्निक कोच का एक रैक में 5 कोच का अपना सेट्स ये भी हम भी दे रहे हैं नहीं तो ये जो गेज पीयू मतलब देखो वो फैब्रिक या 22 कोच के लिए एक चलेगा आपके पास अगर 22 कोच की ट्रेन आ रही है तो आपको मिलना चाहिए चाहे वो फैमिली वाला मिले चाहे वो टेलर वाला एक मिलना चाहिए सर एक क्वेश्चन था मेरा हेलो यस सर प्लीज सर मुझे एक क्वेश्चन था मैं ये जानना चाह रहा था ये इसमें अलग अलग फ्लाइट्स में इसके कपलर के अलग अलग नाम है इसका आइडियल नेम क्या है सर इस कपलर का कहीं पे टाइप 10 हेड कपलर लिखा है कहीं पे सेमी ऑटोमेटिक कपलर है कहीं वेबटेक कपलर है एक्चुअल नेम क्या है सर इसका इस कपलर का सर इसको हम बोलते हैं क्रैश वर्दी टाइप 10 कपलर ओके सर ठीक है सर क्रैश वर्दी टाइप 10 कपलर सर ओके सर वर्दी टाइप 10 कपलर सर एक गेज का टेस्टिंग प्रोसीजर है वो आपको इस मेल पे डिस्प्ले करना है वो मेरी शेयर है तो ये लैपटॉप हमारे लैपटॉप में लैपटॉप पे डिस्प्ले कैन शेयर किया है ईमेल में भेजा ऐसे चलो प्रॉब्लम होगा हाँ उसी के लिए इसी का करेंगे
ज्यादा उसी के इधर हाँ वही वही बात उसमें भी राउंड पूरे एकदम पाँच एवं काटने के बाद हम 40 उसको मारने के बाद उसमें मटेरियल फिक्स ना ट्रायल So this is if you see this yeah, sir. So if you see this procedure, how to use the gauge, so it is available in our manuals that where to how to fit. You see, this is just push the to the coupler gate and fix the gauge, and here we have a yoke. So yoke fitted behind the hook plate, which is the link that we call as a coupler link. So that is fitted here, and turn the lever like this, and like this, and we have to push. So here it will show the limit here. It's in or out. It will show the limit. So based on that, we can take a call. Okay. अगर इन हो गया तो वो सही है Sorry. In limit okay or not okay? In is the wear limits are in. Out means the wear is out, outside our limit. So we have to change the. it's okay okay Okay. Yeah. Inside is okay. Out is not okay. Okay. So this is the arrangement to fix. I mean, link to the. This gauge to the coupler gate. तो ये सर अलग अलग फर्म की अलग अलग गेज है जैसे आपकी फैब्रिक की अलग है या टेलर की अलग है या सेम एक ही कलर Sorry. Same way. Type 10 है ना? No. Standard same. Sorry. The type 10, the mechanism will be same. The design of the gauge will be a difference. Gauge will be differs for us, but it is a procedure to check as per type 10 standard EN 16019. So the gauge should be there to check the wear limits. No, no. But in Delnar coupler, the gauge will be same or different?
I think it will be different. Yeah, I think it will be different. Standard it will be same, I think. Both are. ये क्या देंगे different Because the interface, some interfaces are their own, the mechanism inside that it is their own design. So then it will be some difference will be there. The design we cannot use, it's a different companies, we cannot use the same design. That we have to ensure, we have to confirm. It's same or not? From my understanding, We can yeah, from my understanding it will be different, but anyhow we can confirm. Okay. We will check, sir. But check करके आपको lunch के बाद एक बार confirm करेंगे. Not good. Okay, so that's all about the. So any questions, then we can discuss. One more. तो किसी का कुछ क्वेश्चन है सर आपको? कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड है? अभी तक आपके पास गाड़ी है? कोई पार्ट्स? दो कंपनी का हो जाएगा चला सकते हैं बाकी अंदर पहुंचोगे तो देख सकते हैं गाड़ी में तो बैठ गए दोनों कंपनियों जैसे सर को नॉलेज है वो एक बार बता देंगे आप वंदे भारत में तो लॉगिंग कॉलिंग Okay, so no more questions. Then, Sir. Sorry, yes, sir. हेलो सर अगर इन रूट में कुछ होता है कोई भी प्रॉब्लम और इसी रैक को अगर रेस्क्यू करना पड़े तो सभी रैक में क्या ये रेस्क्यू एडेप्टर अवेलेबल रहता है क्या? सर जो अमृत भारत रैक है उसके दोनों एंड पे सीबीसी है दोनों एंड के जो कोचेज हैं उसमें सीबीसी है तो उससे क्या आप लोगों से रेस्क्यू कर सकते हैं रैक को और इन केस इन बिटवीन कोई कपलर अगर प्रॉब्लम करता है तो फिर आपको रेस्क्यू मोड से या तो उस कोच को काटना पड़ेगा या फिर रेस्क्यू मोड से गाड़ी को साइड लेके जाना पड़ेगा अब सर्विस में नहीं जा सकते ओके यस सर Okay, so no more questions or any other questions? Maintenance संबंधी वीडियो. Sorry? वीडियो मैनुअल इस पे मिलेगा इवेंट पे तो वो कल की तरह एक लिंक बना के दे देते हैं हाँ वीडियो भी अवेलेबल वीडियो सब सारे और मटेरियल्स Yes. जैसे हमारे पास रेस आया हुआ है बैटरी का क्या हो रहा है 1 That we will see. क्वेश्चन के सर नीचे वो रहता है ये बंदे बारे में पता नहीं चल रहा है कहां पे बर्ड तो सर अब हमारे जो प्लान की बात नहीं प्लानिंग पर्सन प्रोसेस प्लानिंग में जाना सारे एक जैसे हैं प्रोसेस प्लानिंग मटेरियल प्लानिंग वो बता दें सर बिल्कुल सब प्लानिंग से गूगल वगैरह इसमें इंपॉर्टेंट ऑफलाइन लिंक जो रिसर्च you प्लानिंग से It is also there, I say when it is there, what is there, then you can. No. These all are in your laptop. These are all training materials. ये है पीपीटी है PPT training. ये वीडियो भी है 3 videos. 3 वीडियो है पीपीटी है एक मेजर मैनुअल
manual once approved or released, then only we can share it. But this is the portion. Yeah, I'll give you. अटेंडेंस होगी सबकी? Okay, so then we can close. Thank you for this opportunity to this explain our problem. Thank you. अभी मेरे को कौन सुना 1:30 1 बजे चलेगा 1 बजे वर्कशॉप 1 बजे चलेगा सर आप ब्रेकफास्ट का कर लीजिए लंच के बाद 1 बजे कांटेक्ट 1 बजे चलेंगे सर क्योंकि हमारी टाइम नंबर सेव किया है? एडमिन में नंबर पहले कंप्लीट नंबर ये मेरा नंबर है। तो इनका नंबर सर अपना नंबर तो सर आपका नंबर शेयर कर दो। नंबर है ना मेरा नंबर आपके पास कॉल कर लीजिए बताना अपना नंबर शेयर करना था ड्राइव पे 70 अमित जी हैं इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा वो रिकॉर्डिंग भी बंद कर दीजिए हाँ सर मीटिंग का कर दो इसको ना अपने स्टूडेंट का कर देगा सर सर उस टाइम कोई किसी का नहीं ऑनलाइन आया बाइक से पर सर पीडीएफ हाँ कर रहे मैं तो वो क्या आपका हाँ ये मेरा तो इसमें व्हाट्सएप व्हाट्सएप हाई भेज देना मेरे को सर दोनों दिन का कल का हो रहा है वो भी दे दो बड़े